All right. What's up, people? Uh, can you please let me know if my voice is audible? I'm visible. My screen is visible. Waiting for more people to join. But meanwhile, those who have joined, all right. Perfect. Cool. So, uh, today's there is a fair chance we can actually get a setup in EU as well as on gold. Gold, mein, I am more of if you remember yesterday, we have drawn these two lines. This is 1.618 and this is 1.212. Price exactly tested that and right now it's falling. Right now we do have this as a very beautiful available liquidity which is supposed to be taken out. We have the previous structure range high that is we have this beautiful structure high that is supposed to be tested and eventually prices has to push down low within some sort of discounted area. Maybe this entire range के अंदर कुछ हो या फिर we will go into refinements afterwards when prices actually retrace, but let's focus on intent today. Let's focus what our intention is and what next we are expecting. Let's actually talk about it. When can we trade gold right now? Just stay patient because uh I'm personally seeing that we can actually see prices pushing down lower to this liquidity level. We have taken out some internal range liquidity which is this high. After sweeping this high, after mitigating this supply area, prices are continuing to push down lower. This was that entire range. If you want to refine it to 1 hour, you can do that too. After sweeping the liquidity, prices are pushing down lower. I'm quite sure of this thing that ये लो तो पक्का जाएगा ही जाएगा. ठीक है. But बात ये है कि now my intent is to wait first before prices do something nice. ये जो करंट एरिया है ये यहीं से गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस है बट आई रियली वांट टू टेक दिस बेट एंड सी इफ प्राइजेस रीट्रेस टू थोड़ा सा प्रीमियम एरिया and then I'll be looking for shots. Right now the 1 hour area that we have marked is basically 1 hour का inefficiency. अगर prices ये supply area में आता है so after a 1 minute confirmation we can actually think of entering in shots and our liquidity the available target is just down here. The next is Euro USD. Euro USD का अपडेट मैंने आपको व्हाट्सएप ग्रुप में दे दिया था that I am more of bearish और I'm more of bearish and I'll be looking for these lows and this low to be taken out because that is definitely liquidity. Which account to use? Use XNext a year back and resuming trading now. You can use XNext, but if you want to add yourself to our exclusive WhatsApp group where we update the trades, where we discuss the problems, where we discuss uh, other things about trades and जो भी बाकी सारी चीज़ें. So the public group that you are in, that is basically one way where I can communicate and you can't. But if you have to talk, communicate to me and get in touch with other people who are in our inner circle, you can actually create a account on Valtex. Uh, so that's basically the broker that I'm promoting. It's safe, it's secure. You can trust with you can trust this broker with your money and you can hold me accountable honestly. I can take care of things if anything goes wrong, which I'm pretty sure nothing will go wrong, but still. So Valtex is the broker that you can use to deposit and withdraw in INR and even you can deposit in crypto as well.
So I will be updating a link for the same right now in your WhatsApp. Not WhatsApp, I will actually update it over here itself. Copy. Right. Docs. Chat. Just give me a minute. Somehow I am not able to update chat here. So- Okay, anyways, I will be just updating it. Just forgot. I can do it from here itself. So you can use this link. Firstly, open an account under my referral, and once you are good with it, so yeah, you can use this particular link to open an account under my referral, and you should be good. So coming to Euro USD, I personally like this area because फोरेक्स में we do have some inefficiency. अगर यहाँ पे अगर आ जाए तो मज़े मज़े आ जाए। देखो चांसेस ये है अभी फ़िलहाल के लिए जो करंट डाटा प्रेजेंट हो रहा है उस हिसाब से प्राइसेस कैन कंटिन्यू टू पुश डाउन लोअर फ्रॉम द करंट एरिया इटसेल्फ। ओके, सो आई विल वेट फॉर more price developments before me executing any trade, but I will be inclined towards, or I am inclined towards taking shots only. Okay, so that's the plan for me. बाकी देखते हैं। गोल्ड, गोल्ड का भी जैसे मैंने बोला आई एम बेरिश एंड आई एम सीइंग दिस परफेक्ट, आई एम सीइंग दिस लो टू बी टेकन आउट। माझं पहिलंच अकाउंट ट्रान्सफर करूया। कुठल्या ब्रोकरचा आहे तुझं अकाउंट? इज इट एक्सनेक्स और सम अदर ब्रोकर? बिकॉज अदर ब्रोकर तर पॉईंट नाही आहे, बट वेल्टेक्सचं जर तुझं आधी सपोज तू ओपन केलं असेल तर या डेफिनेटली। I am personally waiting for some premium area in euro. I really like this one. तो अगर यहाँ आती है तो definitely we are planning and willing to enter in shots. Gold, maybe it's almost the same. I would really like to see prices pushing up higher within some premium area before it continuing to push down lower. My intention says that
We are overall bullish, but a retracement is required. And I'm seeing the yesterday's low as liquidity level. So most probably from that area will be looking कि यहाँ से prices ऊपर जाए, some confirmation and then sweep. Yeah, sure. You can transfer. तुल्हा तू मला व्हॉट्सॲपला टेक्स्ट करतो का? सो आय विल जस्ट अपडेट तो जो रिलेशनशिप मॅनेजर आहे त्याचा नंबर तुला पाठवतो. यू टेक्स्ट हिम दॅट यू वॉन्ट टू चेंज. ना मीन्स तुम्हाला रिसेंटली टेक्स्ट केलेला ना? मला परत एकदा टेक्स्ट कर. I've signed up. Deposit a minimum of $300 and you're good to go. आज लंदन स्ट्रीम कैसे है? बस भाई हर चीज़ में अब आज भाई तुम्हारा पहला दिन जिम गया था. पहला नहीं, मेरा दूसरा दिन था. पहला दिन था संडे को. आज मेरा दूसरा दिन था जिम को. भाई कंसिस्टेंट बन रहा है हर चीज़ में. अभी स्क्रिप्ट भी बनाएंगे, कंटेंट भी बनाएंगे और पैंचो ये साल मचाएंगे. Let's go. Let's fucking go. हाँ भाई. लक का कुछ नहीं है भाई. इसमें बस ये है डिसिप्लिन और सेम ट्रेनिंग वाला सीन ही है भाई. डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी. लक के भरोसे तो कुछ नहीं हो रहा भाई. हमें ही हमें बचाना है. कोई और नहीं बचाएगा. ऐसा तो नहीं है भाई कि नहीं भाई. हेल्थ पे तो काम करना है. इट्स लाइक आई थिंक दिस इज द थिंग I have not been doing for a very long time. Like I wanted to do it, but I have procrastinated. Same content maybe I did the same. You know me from really long time, and I've seen how consistent I am with trading, but not with content, not with diet. Only this aspect I'm working, and but I think if I improve or try to improve my overall discipline, so I think I would actually grow in trading as well, like exponentially. I'm growing. I'm doing things, but yeah, fixing the basics can actually do a lot of great things. Uh, वैसे आई स्टॉप्ड वेकिंग अप एट अराउंड लाइक सुबह सुबह मैं भाई 9 बजे उठता हूँ आराम से. बिकॉज भाई जरूरी नहीं है ब्रह्म मुहूर्त पे उठना है. जरूरी नहीं है. इट्स फाइन. हाँ भाई, जिम पार्टनर की जरूरत है बस, और कुछ नहीं. शादी शुदी कर लेंगे भाई तो वो जिम पार्टनर मिल जाएगी. तो डाइट डाइट में भी चीटिंग नहीं होगी. लेट्स सी. मैं तुम्हें अपडेट करूंगा हर रोज. मैंने जिम गया नहीं गया क्या किया.
लड्डू। लड्डू नहीं भाई, प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन शेक। आई जस्ट फिनिश्ड, ओ मैंने किचन में रख दिया। आई हैड लाइक one whole egg, two egg whites का omelette with bread and one slice of cheese. I had protein, not really shake, like oatmeal, protein oatmeal. Uh, so I'm nicely full, high, like protein rich diet done. Uh, जिम जाना डन। अभी बाकी सारी चीज़ें बची है ट्रेडिंग में, डिसिप्लिन फॉलो करना। नेक्स्टली इज आज कुछ तो स्क्रिप्ट बनाना, ये दिन का गोल है। ऑल्सो स्टेप लाइक 10,000 स्टेप्स या 12,000 स्टेप्स इंक्लाइन पे करना है, तो वापस जिम जाऊंगा दोपहर या शाम में। फिर दोनों प्रोक्रेस्टिनेट साथ में करेंगे। नहीं भाई, भाई कोई तो वन शुड बी द ड्राइविंग पर्सन कि भाई चलो दूसरा लेजी है तो पहला वाला खींच रहा है, जब पहला वाला थोड़ा ऐसे प्रोक्रास्टिनेट कर रहा है तो दूसरा वाला खींच रहा है। इट शुड बी लाइक दैट, इट शुड बी बैलेंस्ड। भाई इमेजिन दोनों दोनों रो रहे हैं भाई, तो वो तो सही नहीं है ना। एक रोए तो दूसरा शांत करे, पता लगा दोनों रो रहे हैं। या एग्जैक्टली, लाइक स्टार्टिंग में ही इफ आई ओवरडू लाइक विद एक्साइटमेंट एंड ऑल तो बर्नआउट जल्दी आ जाएगा। आई एम जस्ट टेकिंग इट स्लो। मैडम देख रही है स्ट्रीम? नहीं यार, पता नहीं मैडम कौन है, ये भी नहीं पता मुझे। संगत का असर भी तो है। हाँ बिल्कुल। बट आई थिंक माई पार्टनर लाइक शुड और वुड बी डूइंग अ डे जॉब, तो फिर सही है ना। तो मेरा बुरा दिन रहेगा ट्रेडिंग में, मैं उसके पास जाऊंगा रोने। भाई ट्रेडिंग, मेरे को ये समझ नहीं आता यार कि जो भी इंडियन ट्रेडर्स है ना, दे नेवर शो कि भाई लॉसेस वॉसेस नहीं हो रहे, कोई भी डाउन साइड नहीं दिखाता, कोई भी ये नहीं बताता कि भाई मैं भी रोया हूँ या फिर मैं भी रोता हूँ अभी भी। सब लोग ऐसे दिखाते हैं मैं तो भाई इमोशंस को मास्टर कर लिया। बट आई सी एट दिस पॉइंट ऑल्सो आई समटाइम डू ओवर ट्रेडिंग। आई ऑल्सो समटाइम गो थ्रू some city decisions. I take some random trades, and it happens with me. And like it happens with everyone, every fucking one. But not a lot of people talk about this, and I think people lie a lot when it comes to showing superiority and showing their discipline. Why everyone goes on a tilt. No, like no fucking one can be disciplined. Say पूरा टाइम कि भाई एक भी गलती नहीं कर रहा, लेकिन कोई इसके बारे में बात नहीं करता। हर कोई करता है भाई चुतिया पे। इट्स जस्ट दैट तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, जैसे जैसे तुम एक्सपीरियंस होते हो ना, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम हो जाती है। चुतिया पे होते हैं, मेरे भी होते हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम रहती है। एंड यू नो हाउ टू रिबाउंस, लाइक तुम उसी थॉट प्रोसेस में नहीं रहते हो शिट व्हाट आई डिड। you know how to bounce back because you have done it a lot of times, and you know how to recover from there, how to get back to the things that you are actually doing. So that is the thing that comes with experience. और दूसरी चीज यार, मैं सोच रहा था कि लोग 10-10 15-15 साल प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते। देयर आर लॉट ऑफ पीपल। तो मैं सोच रहा था कि यार टेक्निकल समझना इतना डिफिकल्ट तो नहीं है। मतलब वो जो तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग का जो गैप है और मार्केट जो एक्चुअल कर रहा है,
वो गैप मेरे हिसाब से 1-1.5 साल मैक्सिमम। इफ यू गिव, यू वुड बी ग्रेट एट टेक्निकल्स। आप में ही देख लो भाई, कितने तो लोग 1.5 1.5 2 2 3 3 साल से मार्केट में रहोगे, राइट? But at this point of time, the problem is not your technicals. Maybe if you have not worked on it, that can be a possible case. I've seen such cases as well, जहाँ पे the ego factor comes in between, and जो ego वाला चीज होता है ना, that thing don't really allow you to uh, learn कि भाई मुझे तो सब आता है। नहीं भाई, वैसा नहीं है। अगर कुछ नई चीज़ सीखने मिल रही है और तेरे काम में आ रही है तो डेफिनेटली तुझे सीखना चाहिए। एंड आई स्टिल हैव दैट एटीट्यूड कि भाई मुझे कुछ ऐसे नया इंटरेस्टिंग सा लगे तो भाई मैं बाद में बोल देता हूँ हाँ चल ठीक है यार, ये मेरे ज़रूरत का नहीं है, ये भली अच्छी चीज़ है बट मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं करना सकता। लेकिन लेट्स से सेम चीज़ मैं रिसेंटली आई स्टार्टेड लुकिंग एट मोर एफवीजीज टू अंडरस्टैंड कि चांसेस कहाँ पे है ज़्यादा आने के। जैसे कि अगर कल के ही ट्रेड में हम देखें, आई एम इम्प्रोवाइजिंग विद टाइम एंड यू शुड टू। जैसे कि मेरे साथ हो तुम तो डेफिनेटली यू विल बी इम्प्रोवाइजिंग, लेकिन अगर लेट्स से यहाँ पे मैंने मैंने आई वॉज वेरी श्योर कि भाई यहाँ से बाइंग होगी, तो यहाँ से जब रिएक्शन है और यहाँ पे काइंड ऑफ स्ट्रक्चर शिफ्ट मिला, अपन ने एंट्री नहीं किया, अपन ने वेट किया वेट किया वेट किया, और जब यहाँ से हमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी नहीं मिला, यहाँ से जस्ट पिक किया है, फिर भी फिर भी वी वर अवेयर कि अब यहाँ से ऊपर जाएगा, because it was bouncing off from a discounted area, the reaction and everything was solid. And here I entered based on this fair value gap. Like once this liquidity got sweep, मेरी यहाँ entry बनी। और बट आई ऑलवेज कीप मेरे डिमांड सप्लाई के हिसाब से स्टॉप लॉस। मुझे पता है प्रोटेक्टेड लो यहाँ का ही है, लेकिन मैंने यहाँ का स्टॉप लॉस लगाया था कवरिंग दिस एरिया, बिकॉज आई एम प्रिटी श्योर कि ये डिमांड बहुत वैलिड है और यहाँ पे भी आ सकती है प्राइजेस। एंड देन एज यू कैन सी प्राइजेस आफ्टर दैट फ्लू। फर्स्ट पोजिशन इफ़ यू रिमेंबर, हमने एग्जैक्टली ये हाई पे बुक करी, मैंने प्राइजेस रिट्रेस करी, मैंने यहाँ पे नहीं हाथ लगाया अब लाइक किसी भी चीज़ में। उसके बाद में अगर तुम्हें याद हो तो मैंने बोला था कि अगर प्राइजेस यहाँ पे आती है पक्का फटेगा, ठीक है, लेकिन मैंने एंट्री करी थी। कहाँ गया? हाँ, 15 सेकेंड में ही होगा शायद। आई जस्ट ऑब्जर्व्ड ऑल द एफवीजीज हाउ एग्जैक्टली इट्स बिल्डिंग, एंड देन आई सेड कि अब यहाँ से तो भागेगा। There was another thing which I saw here, and because of which I have asked you to add more here. बट मैंने ये बोला था कि अगर यहाँ पे आता है तो फटेगा, एंड माई स्टॉप लॉस वाज दिस। एंड देन दिस फकिंग ट्रेड जस्ट मूव्ड. I take another positions off here. I told you as well when it pushed down lower. No, not here, not here, not here. When this high gets taken out, I took some positions off, some, and major were taken out here. But when this drop happened, I said like I was about to execute, but it just moved. So I had nothing to do but let it go. And then after that, it exactly moved to our area. So देखो अभी ये चीज़ें with time मैं भी evolve हो रहा हूँ, and I'm also learning more things. I'm trying to add more confluences, but which are aligning as per my thing and my understanding of the markets, not like anything I'm doing. तो टेक्निकल समझना, एक बेस क्रिएट करना जिससे तुम कॉन्फिडेंटली ट्रेड एग्जीक्यूट कर पाओ, that is a different thing, and that can be done within like 6 months of dedicated efforts or 2 years of on and off screen time. बट भाई 2 साल बाद भी हम क्यों स्ट्रगल करते हैं? 2 साल बाद भी हम पैसे क्यों नहीं कमा पाते? वो है ना एक बहुत बड़ा मेंटल गैप है। It's not technicals, it's not about you anticipating wrong directions. You know every fucking thing, you are catching trades, but you are not able to monetize into your account. Your account balance is not going up. So it's not majorly, it's 101% because of your psychological problems, the mental gap that you have. So ये मेंटल गैप फिल करते करते है ना, कोई लोग 5 साल लेते हैं, कोई लोग 10 साल, कोई लोग 15 साल, और कोई लोग कभी भी नहीं कर पाती है मेंटल गैप कवर।
और जो जो मैंने कहा ना कि तुम ही तुमको बचा सकते हो, लाइक टेक्निकल तुम्हें कोई भी सिखा देगा यार, लेकिन जो साइकोलॉजी वाली चीज है ना, इट्स दैट थिंग दैट यू हैव टू हेल्प योर सेल्फ. एंड इफ यू आर जस्ट यू नो पासिंग योर डेज, हाँ यार चल ठीक है, कल देख लेंगे, कल देख लेंगे, कल देख लेंगे, भाई ऐसे करते करते लोग सालों साल वेस्ट कर देते हैं. एक तो ये है कि जर्नल शायद काम करेगा तुम्हारे लिए. बैक टेस्टिंग आई डोंट थिंक काम करेगा, बिकॉज हर लाइक एवरी फकिंग मार्केट सिनेरियो एंड एवरी फकिंग डे इज डिफरेंट. इट कांट बी सेम. और एक एक अगर तुम कॉन्फिडेंस नहीं है तुम्हें अपने टेक्निकल्स पे, it can help you, but it can also break you. There are two things in this. It can also help you, it can also break you, because I'm terrible in backtesting. I'm terrible. If you ask me to do one day, I will do it with full shiddat. But if you give me a sample data, हाँ एक महीने का अगर, I will just fuck up things like anything. क्योंकि भाई मैं लाइव में वो ट्रेड बहुत सेक्सी वे से लेता हूँ, बिकॉज आई हैव वेरी लिमिटेड टाइम विंडो इन विच आई एग्जीक्यूट. बट आई लॉस्ट कंप्लीट ट्रैक ऑफ टाइमिंग, आई लॉस्ट अ कंप्लीट ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, एंड आई जस्ट बैक टेस्ट. तो उसमें मैं रात के 2-2 बजे भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर देता हूँ, है ना. सो आई एम टेरेबल पर्सन इन बैक टेस्टिंग, बट इफ यू आस्क मी टू डू 1 or 2 day with complete शिद्दत, I will just kill it. Okay, I'll properly use my dimag and do it slowly, slowly, slowly. So backtesting उस way से fine, but not other way around. Nextly, journal can help you to understand how exactly or what exactly you're going through. Mostly not really your technical journal, but your psychological journal, your emotional journal, all of those things, all of the emotions that you're feeling during that point in time, that would really help. तो यूरो अगर देखें तो यूरो मैं थोड़ा ये बात पॉज करता हूँ. लेट्स एक्चुअली जंप ऑन चार्ट्स. आई वॉज एक्सपेक्टिंग यूरो, यहाँ ये नहीं आया. गोल्ड इज नाइसली रिएक्टिंग फ्रॉम द सॉर्ट ऑफ इनएफिशिएंसी लेवल जो मैंने डिस्कस करा था. मैं चाहता था और थोड़ा ऊपर आए, तो ये आया नहीं है. आई जस्ट वेट फॉर सम मोर टाइम टू सी हाउ इट मूव्स. भाई इंटेंशन अपना बेरिश ही है, ठीक है. वी आर सीइंग द स्लो टू गो. We'll wait for more price development to happen. लंदन ओपन हुआ 130 को यहाँ पे, ये गया ऊपर. It has swept some decent liquidity. थोड़ा सा वेट करेंगे before us executing any trade. This liquidity is nice. Let's wait. Have you backtested on FX Reap? Yeah, I did. It will just help you to understand like your percent risk and all those things. In fact, like your entire equity curve, it will help you to understand what timings you are profitable, what session you are more profitable, what you're more comfortable in doing shorting or longs. So all of these things are there, but that backtesting thing can actually only help you to build a technical edge. But for you to execute that technical edge, you need that mental gap to basically cover. If you don't cover with your efforts, even if तुम बहुत अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट हो, तुम एनालिस्ट ही बन के रह जाओगे. You won't be able to make money in the markets just because of the psychological gap you have. Like जो market को चाहिए वो आपके पास नहीं है. So you will never make money in the markets. Even if you can anticipate the directions, you can predict the moves before time. I've seen people who are great analysts, but they're terrible trader because firstly, money management, risk management. They know stuff, they know everything, but still when they are on charts, they end up doing some random things. Okay. So just make sure that you are not one of those. And if you are currently one of those, try to journal and understand why you are doing mistakes. Because
जब तुम ओवर ट्रेडिंग भी कर रहे होते हो ना, तुम्हें पता होता है तुम क्या कर रहे हो ये, लेकिन वो रेज, वो हंगर ऑफ अपना जो लॉस हुआ है वो रिकवर करना है, उसमें एक कॉन्शियस माइंड को पता होता है क्या गलती कर रहे हो, लेकिन यू जस्ट कंटिन्यू टू डू इट, एंड व्हेन एवरीथिंग एंड्स, दैट इज ईदर you lost a significant amount of your balance, or you entirely blow your funded account, or like, or your evaluation account. That's when you realize, oh shit, what I did, right? So ये बात का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना कि try to journal your emotions and keep yourself in check. How you can do that? By limiting your execution. You can't see, जो कल वाला ट्रेड अपन ने लिया ना, वैसे तुम्हें महीने के बस 4 ट्रेड चाहिए होंगे, बस 4 ट्रेड, या फिर हफ्ते में बस तुम 300 बिप भी कैप्चर कर लोगे ना हफ्ते में, दैट इज लाइक मोर दैन इनफ। और तुम्हें नहीं लगता तुम 5 दिन में बस 2-3 दिन बस क्वालिटी सेटअप लो? लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है पता है? व्हेन you have too many opportunities, when you have too many assets, when you are complicating things by looking at your charts constantly, day in and day out, you are trying to hunt opportunities, that's where the things goes wrong. क्योंकि तुम्हें एग्जीक्यूट करने के लिए तो बहुत सारे पेयर्स है, बहुत सारे एसेट्स है, और मार्केट तो कॉन्स्टेंटली मूव ही कर रहा है, तो यू हैव टू रिस्ट्रिक्ट योर सेल्फ इन टर्म्स ऑफ टाइमिंग्स, दैट लाइक इवन इफ लेट्स से 10, 10:30, 11 बजे के बाद मुझे भगवान आके बोल दे कि ये होने वाला है, तो मैं शायद नहीं एग्जीक्यूट करूंगा, बिकॉज दैट्स बियॉन्ड माई ट्रेडिंग टाइमिंग, और शायद वो दिन के लिए मेरा रिस्क एपिटाइट हो गया है भाई, मेरा ख़त्म है, मैं वापस नहीं लेना चाहता कुछ भी। देन नेक्स्ट, लिमिट द नंबर ऑफ ट्रेड्स, maximum 1 or 2 trades in a day. 1 or 2 trades in a day, it's also a lot, because अगर हमारा गोल है 10 से 15% बनाना, और रिस्किंग 1% या 2%, स्टिल तुम्हें उस ट्रेड जैसे हार्डली और 2-3 ट्रेड चाहिए होंगे, विच इज़ क्वाइट अचीवेबल, इट्स नॉट रियली लाइक ओ समथिंग क्रेजी आई एम स्पीकिंग, भाई ईजी है करना। Yeah, 10 to 15% a month on your personal account is definitely possible. On your funded accounts, you should like be conservative. Weekly 2% banao, 3% banao, and just close. एनक्यू भी ट्रेड करना चालू करो, इट्स वेरी वॉलेटाइल, हर रोज मूव देता है वो, प्यारे प्यारे। 1:1, 1:2, 1:3, ईजी है, ईजी है। बस ये है कि what happened with me last year was I took account and like futures ka, and prices were in range. The first trade I end up booking L. I was trying to recover and I was not in a great mental state. And next, I just realized is I don't have any account. I lost that account. What happened from the time when I took my first loss to the email I got, वो गैप हार्डली 4 से 5 मिनट का होगा, और उस बीच मैंने 10 से 15 ट्रेड एग्जीक्यूट कर ली थी, with very big sizing, like maxing out. So I also go on it. It has happened with me, but I have money to bounce back. I have that sort of discipline that I've built. Sometimes it's fine because I am conscious how much, and that was a eval account, so I don't care. But if it is really something significant कि भाई मेरा पे आउट आ रहा है, and if I just fuck up, then भाई मैं सबसे चूतिया इंसान रहूंगा, right? So you just have to make sure that you are not one of those. Like even if you are going reckless, पहली बात जाना नहीं है, अगर जा भी रहे हो वो भी ऐसा ना हो इट्स कॉस्टिंग यू अ लॉट।
And it's not just you, in fact a lot of people do it. जो गैप होता है ना तुम्हारे पहले लॉस का और अकाउंट ब्लो होने का, वो हार्डली 2-3 मिनट का होता है। और 2-3 मिनट में तुम इतना चूतिए जैसा ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर लेते हो ना, एक ही रेंज में, बाई सेल बाई सेल बाई सेल, या फिर बाय, थोड़ा सा लॉस आया फट से एग्जीक्यूट कर लिया, तुम्हें लग रहा है अब एक मोमेंटम आ जाएगा, फट से दूसरा ट्रेड एग्जीक्यूट, वापस उसमें थोड़ा लॉस दिख गया, एग्जिट कर दिया। वो छोटे छोटे लॉस पाइल अप होके तुम्हारा अकाउंट निकल जाता है। तो जस्ट ट्राई अवॉइडिंग दीज थिंग्स। फर्स्टली, रेस्ट, यू कैन फिगर आउट एंड यू कैन डू थिंग्स। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है यार। पेशेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल पता है, आजकल क्या बहन, हर कोई यूट्यूब पे भाई रैंडमली कहीं पे भी एंट्री, यहाँ पे ब्रेक हुआ भाई, इन्फ्लुएंसर्स ट्रेड ले लेंगे, यहाँ पे एंट्री लेंगे, यहाँ पे उनके डेमो अकाउंट पे एंट्री ले लेंगे, 100,000 का रिस्क ले लेंगे। क्रेजी। रैंडमली कहीं पे भी ट्रेड ले लेंगे जस्ट बिकॉज दे आर जनरेटिंग रेफरल्स। एंड रेफरल तुम्हें like, भाई ऐसे भी लोग हैं जो बस रेफरल से पैसे कमाते हैं, वो ट्रेड नहीं करते, बस रेफरल से पैसे कमाते हैं। बिकॉज वेन यू हैव नंबर्स, लाइक वेरी बिग नंबर्स, ब्रोकरेज जो क्रेजी जनरेट होता है, I'm telling you. Three you searched but I didn't and that really fuck me up. भाई जब आप हो इस दिन के लिए, या ये शायद साल की आखिर में था, राइट? जब तुमने 3% बनाया था, लाइक क्लोज इट फॉर दिस ईयर। भाई अकाउंट प्रिजर्व करना या ब्लो ना करना इज स्किल। नॉट अ लॉट ऑफ पीपल कैन प्रिजर्व एंड होल्ड देयर अकाउंट फॉर टू लॉन्ग। See, there are different ways to make money, okay? There are different ways to milk firms. If you have a strong financial backing and a background, then it makes sense for you to go reckless, because तुम्हें घंटा फर्क नहीं पड़ रहा कि भाई ये अकाउंट ब्लो कर दिया, ऑन टू द नेक्स्ट वन, ऑन टू द नेक्स्ट वन, राइट? एंड जब उससे पे आउट निकालोगे, ज़्यादा रिस्क करके ज़्यादा पे आउट निकालोगे, अगेन द सेम थिंग, ऑन टू द नेक्स्ट वन। अगर वो ब्लो भी हो जाता है, ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। But if you have a humble beginning, if you are starting small, it's your job to fucking preserve and take it slow. At the same time, it should not be that slow that you exhaust your complete time energy in just one $5,000 account, उसके पीछे तुम 3 महीने लगा रहे हो। फिर तो वो चूतियापा हुआ ना भाई। उससे अच्छा तुम पर्सनल अकाउंट ट्रेड कर लो। अगर तुम, देखो बैलेंस होनी चाहिए चीज़ें। अगर तुम $5,000 का अकाउंट ट्रेड कर रहे हो, उसमें तुम्हें 2 फेजेस पास करने, तुम एक फेज में 3 महीना लगा रहे हो, है तो साल भर लगाओगे क्या पहला पे आउट पहुंचना? और ये भी कोई गारंटी नहीं कि पे आउट आएगा। उससे अच्छा तुम खुद का अकाउंट ट्रेड कर लो ना। लगाओ भाई $400-500 और ट्रेड करो। दैट इज मच बेटर। भाई अपने रेंज में आया है, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि यहाँ से मुझे चाहिए एक स्ट्रक्चरल शिफ्ट। यहाँ से थोड़ा रिएक्शन है, यहाँ से ब्रेक कर दे भाई, मैं हूँ रेडी शॉर्ट के लिए। ठीक है, मैं घुसूंगा फिर शॉर्ट। US 100 बहुत अच्छा बाइंग दे सकता है यहाँ से, फ्रॉम द करंट एरिया फ्रॉम वेयर इट इज रिएक्टिंग। इट हैज potential, it has a chance of pushing up higher। भाई यूरो में ना, मतलब अगर मेरे में चुल होती ना, तो शायद मैं यहाँ एंट्री कर लेता और स्टॉप लॉस इसे रखता, 25 पिप का स्टॉप लॉस। नहीं यार, सेंस नहीं बनता इससे अच्छा।
ये मेरी बात कैसे कर। भाई बस तुम्हारी बात नहीं है, हर किसी की बात है। अगर तुम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रहे थे, या फिर इससे पहले मैंने क्या बोला, आई हैव वेरी शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, मैं भूल गया मैंने क्या बोला, बट जो भी बोला आई मीन इट। भाई ये मस्त इनएफिशिएंसी में आया और रिएक्शन तगड़ा दे रहा है, ठीक है। तो अभी अपना अलाइनमेंट का वेट करेंगे, अलाइनमेंट होते ही भाई शॉर्ट पेल देंगे। मुझे बस ट्रेडिंग याद रहती है, मुझे लोग याद रहते हैं, जो मेरे जो गिने चुने लोग हैं आप में से। हाँ वो याद रहता है, बाकी बातें मेरे याद नहीं रहती भाई। बट मैं मीन करता हूँ सारी बात है। बस यही है कि जो मैंने बोला, आई डोंट नो व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। मैं बोल क्या रहा था। ओ अच्छा, पर्सनल अकाउंट ट्रेड कर लो, ओके। 5000। भाई टाइम लगा के मतलब नहीं है यार, उससे अच्छा तुम पर्सनल अकाउंट ट्रेड करके उसे ग्रो करो। एटलीस्ट तुम्हें रिजल्ट तो मिलेगा, वो खुद का पैसा होगा, तुम उस हिसाब से ट्रेड करोगे। या तो ऐसे कर सकते हो, अगर तुम्हें ये फंडेड में घुसना ही है, तो खुद का एक 200 या $300 का अकाउंट खोलो, ठीक है। उसमें तुम ट्रेड करो, और ट्रेड करके जो पैसे बनाएंगे ना, वो री इन्वेस्ट करना फंडेड अकाउंट्स में, और फिर टेक अ बिग लीप ऑफ फेथ एंड जस्ट ट्राई टू रिस्क मोर एंड डू दैट। बिकॉज ये तुम्हारे मेहनत की कमाई का पैसे का अकाउंट है। तो पहली बात, अगर चला भी जाए ना, तो भी तुम्हें पता है "हाँ, मैं वापस कर लूंगा"। मैंने खुद ने पैसे बना के ये अकाउंट खरीदा है, वो भी मार्केट से ही। अपने पास ऐसा तो नहीं है ना कि भाई अंधा पैसा पड़ा है। अभी तुम्हारे पास हो बात अलग है, मेरे पास नहीं है अंधा पैसा, या फिर मेरे पास नहीं था अंधा पैसा। अभी मेरे पास थोड़ा बहुत है पैसा, तो अभी आई कैन जस्ट गो रेकलेस। बट हाँ जो भी, चलो अब वेट करेंगे यार, थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाए। थोड़ा सा क्या, हमें कंफर्मेशन चाहिए प्रॉपर प्रॉपर। If we get a confirmation, we can think of entering in shots, which is भाई 1:2 के लिए किसी को एंटर करना है ना, 1:2, तो तुम एंटर कर सकते हो, ठीक है, यूरो में। Honestly, I'm not executing, but I'm calling this out. If you want to enter with a small risk, you can. बिकॉज तुम्हें पता है मेरा यूरो का इंटेंशन है ना, बहुत पहले से बेरिश था। लाइक बहुत पहले से। व्हेन प्राइस वर हियर आई वाज अवेयर दैट दिस लो इज नॉट सपोज टू होल्ड। यू कैन क्लियरली सी यार, अगर इसे बाउंस देना होता तो दे दिया, दे चुका होता अब तक। इट डोंट होल्ड एनी स्ट्रेंथ। ऐसे मैंने नहीं करा है एंटर, ठीक है, दिस इज मी बीइंग जस्ट ट्रांसपेरेंट कि भाई ठीक है, मुझे मतलब ये ट्रेड लॉजिकल है। बट आई हैव डिसाइडेड फ्यू थिंग्स फॉर मी माई सेल्फ कि मोस्टली लंडन आई विल ट्राई टू अवॉइड। दिस इज़ वेरी नाइस, अगर मुझे और थोड़ा सा ऊपर मिलता ना तो शायद मैं एग्जीक्यूट कर देता, बट दिस इज ऑल्सो नॉट बैड, ओके, आई एम टेलिंग यू। इट हैज़ स्वेप्ट नाइस लिक्विडिटी, यू हैव परफेक्टली प्लान्ड दिस पर्टिकुलर एंट्री बिफोर टाइम। अगर तुम स्मॉलर टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये काफ़ी लॉजिकल ट्रेड दिखेगा तुम्हें। अगर 1 मिनट में जाओगे, यू कैन सी द फकिंग थिंग, लाइक दिस इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल। सो दिस ट्रेड डज मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। सो if you want, just go and execute. This is a great trade, and we do have the solid intention that it will just go and push down lower. भाई कर लो, भाई कर लो, एग्जीक्यूट कर लो, चलो कर लो, एग्जीक्यूट कर लो। I executed with small risk. I also executed.
Yeah, like risking just like $200 in this small risk. I've entered, keeping this as a stop loss. You also guys enter, go ahead. Good job, Hancho. After 3% not trading till the exactly, bhai. Hi, bhai. I'm gonna trade in AU entered shots. AU entered shots at 16165. Okay. I'm planning to hold there 663, 66338. Yeah, quite logical. 38 would be extremely deep. The first target should be this low that is supposed to go. And then next, something within this inefficiency you can like 66442 something like that या फिर देखो यहाँ पे भी आ सकता है इनफैक्ट तुम्हें पता है ये नीचे भी काफ़ी ज़्यादा जा सकता है बट दिस इज़ अ डिसेंट डिमांड एरिया इन डेली टाइम फ्रेम तो ये डेली का जो सेल टू बाय है इसके हाई तक तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ तो ये 6635 अगर 1H में जाए तो yeah I would say something within this daily का sell to buy looks good. I have entered in this trade so continue to hold. I'm in this with you. वैसे risk is comparatively less जो gold में कल था that was decent. This is more what?
Dun, dun, dun. हाँ, गोल्ड ऊपर भाग गया तो उस केस में ये हो सकता है, गोल्ड की केस में, कि गोल्ड ऊपर भाग जाए। ये भी हो सकता है गोल्ड की केस में, बिकॉज it has, like, if this ends up closing bullish, we check 1 hour, not 1 hour actually, 4 hour, then this is just a liquidity hunt. And if this candle holds bullish, and if it closes bullish, and if it takes out this high, I'll incline towards buying then. But अभी फिलहाल के लिए I am inclined towards selling only. Because यहाँ पे liquidity है, but अगर hold करता है तो I'm not against it. Like, if prices continue to hold bullish, I'm fine. और इसीलिए अपन ने randomly enter नहीं किया ना risk entry पे. We are sure and conscious of this thing कि we want it to shift our order flow and then show us conviction before it push down lower. भाई यूरो का ट्रेड है, हम होल्डिंग। अरे छोड़िए, fuck it. Structurally in every way, this screams out loud that it is bearish and it will take out this. So I'm not really hesitant. This is a good trade. Continue to hold. Okay, this is a fucking good trade. Continue to hold. बस अगर नसीब गांडू हो तो शायद प्राइसेस और थोड़ी प्रीमियम में आ जाए, है ना? तो कोई नहीं, सप्लाई से अपन ने एंट्री ली है आफ्टर अ वेरी नाइस कंफर्मेशन. We have seen a shift in order flow. We have seen 15 minutes order flow holding and showing bearishness. We have also considered the probability of this being liquidity and prices pushing up higher, mitigating this, and again pushing up, pushing down low. So this is a good trade. Continue to hold. Unable to deposit? How is it possible? Well, you can text me on my WhatsApp number, and I'll help you there. Just text me on WhatsApp. And guys, continue to hold this trade, okay? Don't exit in between. It's a good trade.
Risk 2% on this trade. Wait, mm, what account is that? First, tell me that. And I said risk low. We are risking 2%. That's not good. It's around break even only. Take another 1 or 1.5% off from that position. एक लॉट लिया है तो 0.75 निकाल दो या पॉइंट फाइव निकाल दो. Like reduce half of your risk. If it is a personal account around $300, that is fine. But you're not supposed to risk that much on this trade because I was more convinced. ये इसमें है, बट अगर ऊपर आए और यहाँ से ऑर्डर फ्लो शिफ्ट कर दे, मैं ऊपर और पोजीशन ऐड करना चाहूँगा because we have given it a big room and it's not very refined. See, I'm confident कि ये नीचे ही जाना चाहिए as per technicals and as per logic. लेकिन जैसे मैंने कहा कि 12 घंटों में यहाँ पे भी एक सप्लाई है, so also we should not ignore that possibility. So risking 2%, it's not really that great. ऐसा हो कि भाई तुम पोजीशन लेके छोड़ सको, है ना, उसको बार बार देखने की जरूरत नहीं, अरे क्या चल रहा है, अरे क्या चल रहा है. So it should be that amount of size that you need to invest and put in this particular trade because it's not really greatest of the greatest, right? गोल्ड में अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है तो लेट्स सी. I am holding this, okay? Hold, even if we end the stream, just make sure you continue to hold. Prices are slow right now, but continue to hold. Also, we do have a news at 7, so just make sure you are not taking anything after I end the session and before we do live today. Okay? So just make sure you don't do that. Mm, 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 mm.
So, folks, I am just continuing to hold whatever I've executed, and I am calling it a day for now. I'll catch you and see you in London. Uh, Not London, New York. We will actually, in fact, catch up at 6:45 because we will be trading CPI. We'll be observing what's happening throughout CPI, and we'll see if we happen to get any opportunities. So yeah, that was about it. I'll be seeing you all at 6:45. I'll be updating the link for the live on your uh WhatsApp groups, and we'll keep you updated before I show up. And I'm leaving the screen and I'm leaving our Euro trade. I'm not really bothering myself much because I have a small in this, so it's fine. And if price push up higher, as I said, there's this inefficiency which can hold well. So we'll see how things builds up there. Okay. So yeah, that was about it. I'll be seeing you all in the evening. Till then, bye bye. Take care and have a great day ahead. See you. Bye. Bye bye. Bye bye. You can use Veltex. You can check the pinned message. वो link पे click करके open account and text me on WhatsApp and I'll help you with further details. Yeah. See you. See you in the